बयान सामने आया है। रिश्ते से लेकर आज दिन तक इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। उनका खास चाहिए पे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है, अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये कनेक्शन डेंजरस है, कोई और मुल्क भी जो है शायद इसकी हिमायत में खुलकर सामने आ जाए। पीटीआई के चैनल को करप्शन के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इसराइल का अच्छा भी नहीं बचा सकता। पीपुल्स पार्टी ने मुत्तहिदा को जमात इस्लामी को आपस में भाई भाई कर दिया। ता कयामत सिंध एक सूबा ही रहेगा। भारत से आने वाले पानी के बायस दरियाए सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह तेजी से बढ़ी है। गंडा सिंह के मकाम पर 57,780 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। भारत से आने वाले पानी के बायस दरियाए सतलज की सतह बुलंद से बुलंदतर होने लगी। गंडा सिंह के मकाम पर 57,780 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का अंदेशा है। कसूर के करीब दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हवेली लक्का के मकाम पर भी दरियाए सतलज के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज रात 50,000 क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। इंतजामिया ने इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। इस्लामाबाद के चलेंगे, वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Dr. Sheikh Kaisal Waheed, Chairman Conference Committee, Mr. Harun Qasim, Co-Chairman, and our prominent business members from pharma industry, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Let me at the outset pay my heartfelt tributes to your efforts, your ingenuity and your commitment to promote pharma industry and transform into one of the most growing export industry in Pakistan. Your quality of your products is, alhamdulillah, established and beyond any ray of doubt, and you have earned a great name in this field. So I'd like to offer my deep gratitude and heartfelt mubarakbad to all of you on behalf of the government of Pakistan, myself, because you are great ambassadors of Pakistan who have earned a great name. Now the point at issue is that it is a matter of, not a matter of debate, but a matter of commitment on your part and the part of any government of the day to protect the poor of this country in terms of pricing formula for life-saving drugs. And now there is inherent contradiction, and I appreciate that because of a rising trend of inputs, their cost, the prices, obviously, cost of production has gone up, and it has a direct confrontation with the protection of the poor in this country in terms of important life-saving drugs. But that does not mean that the government of the day should ignore your pressing demands and valid challenges. Government of the day has to obviously protect the poor on one hand and also ensure that the industry is in a stable condition and does not suffer for undue delays in terms of decision making. That is one of the main reasons I constituted this committee, and this committee had extensive discussions with you. Some of you sitting here met me individually and collectively, and I'm very grateful to my team, Finance Minister Ishaq Dar, Health Minister, Commerce Minister, and Minister for Industries and others, to have resolved this issue to a large extent. But the point at issue is that we are gathered here not to make speeches, but to do something cogent, palpable, to support your great efforts, and in a manner which should promote and support your efforts, and also protect the needy and the helpless. May I also recount and recollect from my memory a couple of instances which you are very well aware. Back in 2016, when I was serving as the Khadim of Punjab, I had decided, and you know it very well, to procure medicines for government hospitals. And I made a public statement that the quality of the medicine would be, which can be easily accepted by the highest office bearer of the country down to the common man. And for that, I had dedicated roughly about 7-8 billion rupees for procurement. You are well aware. We went for a very transparent procurement mechanism, and companies were pre-qualified, obviously.
because we didn't want spoilers to spoil the entire effort. And as a result of that, there was hue and cry, I know. But as a result of that, we were able to select 16, 18, 20 companies. This is my memory, I hope I'm not wrong. And then, ladies and gentlemen, we went for this bidding process. And then those companies who had qualified for those procurements, their samples were sent abroad, as well as यहाँ की लैब इसका क्या नाम जो फेडरल गवर्नमेंट में होती है उसका वो एब्रिविएशन क्या है उसका no there's a testing laboratory but there's an abbreviation for this drug testing laboratory, something like that. And I concede that at that point in time we had a few labs in Punjab which were up to the mark, but most of others were redundant or not efficient to come up to the level of people's expectation. Now, here is the story. We sent those samples to the federal lab, the ones in Punjab, and then you know it very well. It's an open secret. It's not something which you are not aware of. And then samples to Britain and France and some other countries. 90% or more than 90% of the lab reports in Pakistan were all okay, and the lab reports from abroad were about 40% okay, or 50%, I don't remember, but this was the figure I remember. There was obviously hue and cry, and the companies who are very well known, mashallah, you're sitting here, you are doing a great, fantastic job, no doubt about it, but this was a fact. And then we established our own labs in Punjab, of state of the art, you know it very well, at Lahore, then I think at Multan, and some other place, Faisalabad, thank you, and other places. Next year, when we made this procurement, and reports were, samples were sent to labs, Europe and other countries, and these labs in Punjab. Alhamdulillah, I'm telling you, reports, samples had exactly the same report as international reports. So I salute your hard work. I salute your wonderful contribution, and those labs which were established in consultation with a British company. I remember I visited their head office in London as well, out of London. I think the State Secretary was speaking in American accent, and my honorable chairman of this association was also speaking English, but please allow me to speak in Urdu now. तो मैं आपको, sorry, I hope you understand Urdu very well. They will translate to you later on. तो मैं कह ये रहा था कि बाखुदा आप बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी हैं और आपने बहुत मुल्क का नाम बनाया आपने, लेकिन जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हमने मिलकर उसको हल करना है. मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मुनाफा छोड़ दें और नुकसान का, क्योंकि सवाल नहीं पैदा होता, कारोबार से चलता नहीं है. आप प्रॉफिट्स कमाएं, जो आपका हक है वो आपका, आप रिस्क लेते हैं, यू आर ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स. बैंक से आजकल जो रेट है वो भी 19-20% है या 22% है, ये 22% है, जो कि इट्स अ किलर. इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये पॉलिसी रेट्स कम होंगे इंशाल्लाह. आज रात को IMF का बोर्ड की मीटिंग हो रही है, खुदा करेगा इंशाल्लाह उसमें हमारा प्रोग्राम अप्रूव होगा, आपकी जो LCs हैं और खुल सकेंगी, हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे. लेकिन दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए लॉन्ग जर्नी, जिसमें बड़ी हार्डशिप्स आनी है, बड़ी मुश्किलात आनी है. उसमें हम दोनों ने, जो भी हुकूमत वक्त होगी, सियासतदानों ने, कारोबारी हजरात ने, आपने और मुल्क के तमाम इदारों ने मिलकर इस मुल्क को बनाना है. इसके लिए मैं आपकी बात मैंने बड़े गौर से सुनी है. मैं एक कमेटी आज भी बनाने को तैयार हूँ, ताकि जो आपका जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको हम किस तरह और उसको बढ़ाएं, उसको एक्सपैंड करें. आपके जो जेन्युइन जो आपके चैलेंजेस हैं उनको हम किस तरह हल करें. लेकिन अंग्रेजी में वो कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो. हजरत मौलाना बैठे हैं, मैं दूसरा कह देता हूँ कि ताली दो हाथों से बजती है. तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर बड़ी अर्क रेजी से बैठ कर हुकूमत के साथ इन मामलात को डिस्कस करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आपने मुतालबात पेश किए हैं, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की आईनी मुद्दत ख़त्म होने से बहुत पहले हम ये मामला हल कर लेंगे और आपको हम ये इंशाल्लाह ज़रूर. लेकिन इसमें आपको भी बढ़ना होगा. मैं जब पेरिस में मिला IMF की MD को, तो उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर देयर इज अ बिग गैप बिटवीन आवर आस्क्स एंड व्हाट यू आर प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक दोज स्टेप्स. तो मैंने कहा कि यस वी आर गोइंग टू स्टेप फॉरवर्ड एंड ट्राई टू कम टू अ मीटिंग पॉइंट. लेकिन आप भी इसमें आगे बढ़ें. उसने कहा पहले तो उसने कहा ये हो नहीं सकता, अपना लंबी बात थी, लेकिन बाद में जब बर्फ़ पिघली तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला सुलझे. और फिर देखा, मैं आपको बड़े खुलूस दिल से बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में ये कोई मिठाई बांटने का मौका नहीं है. आप जानते हैं IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो जकड़ के रखा हुआ है हमारी इकॉनमी को. यही उनका मॉडल है पूरी दुनिया में. लेकिन आज हमें सब्र के साथ हमें इसको एक्सेप्ट करना है
उस वक्त के लिए कि आप मिलकर हम सब मेहनत करके इसार और कुर्बानी के साथ पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ हम ले जाएं। और ये इंशाल्लाह नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, लेकिन अपना मुश्किल ज़रूर है। दुनिया में कोई भी चैलेंज होता है उसके साथ अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं आपको बता जा रहा था कि फिर अल्लाह ताला ने किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने दिन रात मेहनत की, उनकी टीम ने कई दिन, हमारे जो सफारती सतह पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी काविशें की। कल जो $2 अरब जो आया है ये खालिसतन, ये मैं आपको बिल्कुल ये बात देखिए, हम अगर बात को लाख छुपाएंगे तो छुपती नहीं है। सच जो होता है वो 100 साल बाद भी सामने ऊद कर आता है। झूठ भी इस तरह नहीं छुप सकता। वो भी कभी अपना आप बहुत कोई सेंसिटिव बात हो तो कानून में बात करेंगे, लेकिन पता हर एक को होता है कि मामला असल है क्या, हकीकत क्या है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि $2 अरब जो आया है ये खालिसतन, ये हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी खालिसतन उनकी काविशों से आया है कल, और $2 अरब जो जमा हुआ है। कहना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं मिला हूँ MD IMF को पेरिस में, बड़ी हमने मेहनत की, सियासी महाज पर बेपनाह मेहनत की, मैंने बताया आपको। लेकिन अगर मैं ये कहूँ जनाब मैंने वो भी तीर मारा तो आप कहेंगे ये क्या हमें राम कहानी सुना रहा है। ये कौम तभी आगे चल सकती है, आगे बढ़ सकती है विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। अपने अपने दायरे में रहकर अगर हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बाखुदा ये पाकिस्तान चंद सालों में आप अपनी मेहनत से उसको आप वहाँ पर पहुँचा देंगे जहाँ पर पहुँचने का इसका हक है। आज सुबह मैंने एक तालीमी सेमिनार में मैंने ये बात कही थी कि मिडिल ईस्ट में वहाँ पर अल्लाह ने उनको तेज दिया है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे वो बरादर ममालिक हैं, हमें अल्लाह ताला ने आप जैसे जहन दिए हैं, आप जैसे कारोबारी लोग दिए हैं जो कि दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं और मुल्क के लिए आप अरबों डॉलर कमाते हैं। ज़मीन है ज़राअत के लिए, मादनियात हैं जहाँ पर खरबों डॉलर जहाँ पर वो दफन है। IT हमारी टेक्नोलॉजी जो है आप जानते हैं, वी हैव यूथ बल्ज, हमारी जो नौजवान जो पौध है वो 60% पाकिस्तान की आबादी का, उनको हम हुनर सिखाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स दें और फिर उनको हम बाहर भिजवाएं। ये मुल्क जो है ये हमारा जो अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये एक उफ़क़ पर एक नया मुल्क बन के आएगा, लेकिन बातों से नहीं, अमल से और मेहनत से। मैं सिर्फ ज़्यादा आई एम नॉट हियर टू डिलीवर अ सर्मन और अ लेक्चर, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये कह रहा हूँ कि आप हमारे बहुत ही मोहतरम आप सरमायाकार हमारी कम्युनिटी बैठी है फार्मा से, मेरी आपसे गुजारिश है कि गरीब आदमी का आप ख्याल रखें, उसकी दवाई का। हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुतालबात मानने के लिए मैं हाज़िर हूँ, और आज ही मैं कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट कर देता हूँ जो उन्होंने बताया है। 2 हफ्ते का हम टाइम रखते हैं, आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे 2 हफ्ते में इन मुतालबात को हम मंजूर करके जो जायज़ हैं हम आगे बढ़ें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने यहाँ पर मुझे दावत दी। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और पाकिस्तान को आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मौजूद हैं और 6th पाकिस्तान फार्मासिस्ट अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम, एडवांस हेयर रिमूविंग फॉर्मूला, स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम। रूफ मास्टर, जो छतों की हीट और वाटरप्रूफिंग के लिए एक बेहतरीन इलास्टोमेरिक रूफ कोटिंग है। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। इन्वर्टर फैंस तो बहुत है, लेकिन सुपर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर फैन है सिर्फ पाक फैन, जो 30 वॉट पर देता है तेज हवा के साथ साथ बिजली की जबरदस्त बचत। पाक फैन, इट्स मोर देन अ फैन। पार्लर जैसे फेशियल का निखार सिर्फ 10 मिनट में। मेरा पार्लर मेरे पास। गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। This hourly clock is brought to you by अब कैश की फिक्र नहीं, क्योंकि जैज़ कैश है ना। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज, सिंध असेंबली की तरफ मार्च, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुताबिक मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। असातिज़ा का मुतालबा है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और अलाउंसेस दिए जाएं। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद में कुरान पाक की बेतौक़ीरी में मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। इंसानी हुकूक काउंसिल के 28 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 मुल्कों ने मुखालिफत में वोट दिया। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बलूचिस्तान के इलाके योब में दहशतगर्दों का सुबह सवेरे गैरिशन पर हमला, सिक्योरिटी एहलकारों ने तंसीबात में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। 2 दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन खराब करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे।
दासू हमले का मास्टरमाइंड कलदम टीटीपी का बदनाम जमाना दहशतगर्द सरगना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। दासू प्रोजेक्ट के करीब बस पर हमले में चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद हलाक और मुताबिद जख्मी हुए थे। हालात दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत बेगुनाह शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब था। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर या जब भी होते हैं, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दुआ करें आज IMF में प्रोग्राम की मंजूरी हो जाए। मुश्किल दौर जल्द गुजर जाएगा, मुल्क मुस्तहकम होगा। चीन ने बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा, जिस तरह चीन ने हमारी मदद की हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की फराहमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब है। IMF पैकेज की मंजूरी से डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में कायदे अवान का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून ने वजारत आला के लिए हाजी गुलबर की हिमायत का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर हमख्याल ग्रुप के राजा आजम जावेद अली मिनवा और राजा जिक्रिया ने कागजात जमा करवाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से सस्ता की दरखास्त मंजूर। कल जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए, कभी ऐसा देखा है कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की बुनियाद पर सिर्फ आज हाजिरी से माफी दे रहा हूं। PTI लीगल टीम ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कॉपी अदालत में जमा करा दी। दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बुलंद होने लगी। कसूर में कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का रेला झंग की हुदूद में दाखिल। रेला आज रात त्रेमू बराज से गुजरेगा। निगरान वज़ीर आला का फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। दरियाए सतलज के बेड में मौजूद आबादियों के फौरी इनखला का हुक्म। मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। गंधारा तहजीब के फरोग के लिए इस्लामाबाद में सिंपोजियम। गैर मुल्की वफूद और बुतमत के पेशवाओं की शिरकत। चेयरमैन टास्क फोर्स रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज और अहम मुल्क है। यहाँ मुतादिद तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। बैनुल अक़वामी मुहक्किकीन को पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। सकाफती और मजहबी सयाहत से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा।